तो ये डिसीजन लिया गया कि SCO is a multilateral forum, it's a multilateral engagement. और जैसे जब मैं यूनाइटेड नेशंस के किसी इवेंट पे जाता हूँ, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो गया या G77 ग्रुप का चेयरमैनशिप के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में कोई मीटिंग होता है, तो that doesn't count as a bilateral visit to the United States. That's a multilateral organization जिसमें हम शिरकत कर रहे हैं. सेकंड पॉइंट जिस पे हमने गौर किया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO, जिसका हम और भारत 2017 में मेंबर्स बने एक साथ, इनका बानी जो है, इनका फाउंडिंग मेंबर्स जो है, एक तो रूस है और दूसरा हमारा ऑल वेदर जो फ्रेंड चाइना है, वो इनकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं. हमने अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, अपॉलॉजीज के वी स्टार्ट लेट. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सर, थैंक यू. तो ये इस पॉइंट को भी नोट किया गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर्स सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीन है. जब से ये यूनिटी गवर्नमेंट आया है, हम SCO के कॉन्टेक्स्ट को और सेंट्रल एशियन ममालिक को भी अपना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का प्रायोरिटी बनाए हैं. और आपने देखा होगा कि पिछली जो SCO मीटिंग हुआ था ताशकंद में फॉरेन मिनिस्टर्स का, समरकंद में हेड ऑफ स्टेट्स का, उसमें तो पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से शिरकत भी किया. और जो हेड ऑफ स्टेट्स का समरकंद में मीटिंग हुआ था, that was the first visit for the president of China outside of China after becoming after the COVID pandemic restrictions were lifted in China. तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम भेजते हैं कि ना सिर्फ कितना सीरियसली हम सब SCO को लेते हैं, बल्कि कितना सीरियसली चीन हमारा SCO को लेते हैं. फिर हमारा जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, एंड इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट मैं तो कभी कोई प्लेटफॉर्म छोड़ने का हामी नहीं हूँ. जो भी वेस्ट के भी की तरफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर भी भरपूर शिरकत और अपना मुकदमा उनके सामने रखना भी जरूरी. तो इस फोरम पे भी सोचा गया कि जहाँ CPEC हमारा पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा एक फंडामेंटल प्लेटफॉर्म है, इंटरकनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी CPEC के कॉन्टेक्स्ट में हमारा एजेंडा आइटम है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने समझा कि एक्चुअली ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ जाएं, मगर इस अंदाज में जाएं कि हम पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना सिर्फ उन सारे ममालिक के सामने और भारत के सामने, लेकिन दुनिया के सामने रखेंगे. और अगर हम नहीं जाते, इट वुड बी अकिन टू कटिंग आवर नोज टू स्पाइट आवर फेस, कि हम ओपन फील्ड दूसरे को क्यों दें. Why do we give them an opportunity to go unchallenged? So after quite a lot of consultations, considerations, फिर उसके बाद जाने से पहले मैंने इंडिविजुअली जो हमारे इत्तेहादी जमातों हैं उनके सरबराह से, उनका पार्लिमानी लीडर से या किसी न किसी से रब्ता करने की कोशिश की, ताकि मैं अपने तौर में तो जाऊं पर मैं सबके इनपुट के साथ जाऊं. तो इस इनपुट को लेके हमने ये फैसला लिया कि हम जाएंगे, और मेरा ख्याल में it turned out to be a good decision to go. जाने से मुझे ये मौका मिला कि एक तो there's the official SCO कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैंने पाकिस्तान का स्टेटमेंट, पाकिस्तान का बयानिया सामने रखा. जो हमारा मेज़बान मुल्क था, जो हमारा होस्ट कंट्री था, उनका इरादा था कि इस प्लेटफॉर्म को भी अब्यूज़ करके उनका जो वर्जन है, उनका जो परसेप्शन है, उनका जो एक बयानिया है, वो अनचैलेंज सामने रखते. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ मौजूद थे. जहाँ भी, वैसे तो SCO के रूल्स है, SCO के गाइडलाइंस है कि हम एक दूसरे के जो बायलैटरल इश्यूज होंगे उसूली तौर पर वो नहीं उठाए जाते, मगर नाम लिए बगैर हमारा बेज़बान ने ऐसे कुछ इश्यूज का जिक्र किया था अपना तकरीर में. तो फिर हमने भी मुनासिब समझा कि अगेन विदाउट टेकिंग एनीबडीज नेम, हमने पाकिस्तान का जो इश्यूज है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, वो भी सामने रखा. और जो थ्रस्ट था भारत की
मैसेजिंग में दहशतगर्दी के बारे में, और ख़ास तौर पे ये जो इम्प्रेशन वो पेंट करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान तो दहशतगर्द है, पाकिस्तानी तो दहशतगर्द है, कश्मीरी तो दहशतगर्द है, हम दहशतगर्दों से तो बात नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल में एक बहुत पोइनियंट, पावरफुल और उनका बयानिया का एक मुंह तोड़ जवाब ये था कि मैं वहाँ बैठ के, मुझे ये मौका मिला कि मैं उनको समझाऊं, मैं उनको कहूं कि मैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं खुद इस टेबल में से जो भी बैठे हैं मैं खुद मुतासर हूं in a way that nobody else has been affected by terrorism and my people have been affected in a way more so than anybody else by terrorism. यहाँ तक कि मैंने कहा कि अब आप अगर जो सारे ममालिक यहाँ मौजूद हैं, इन सब का जो दहशतगर्दी से मुतासिर लोग हैं उनको आप मिला भी दें, पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी की वजह से लोग शहीद हुए हैं, मुतासिर हुए हैं, हमारा जो कैजुअल्टी काउंट है वो इनसे ज़्यादा है। और यही वजह है कि हम असल में चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी का हल निकालें। इसलिए नहीं कि वेस्ट हमें बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमारा ईस्टर्न नेबर हमें बता रहे हैं, इसलिए कि हमारा मुल्क में और हमारा फ़ायदा में है और हमारा अपना ऑर्गेनिक इंटरनल मसला है जिसका हम मुकाबला करना चाहते हैं। उस इवेंट में, उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के साथ साथ जो तमाम वज़राए ख़ारजा SCO के प्लेटफॉर्म के मेंबर्स हैं, हर एक के साथ मेरा या पूरा बायलैटरल मुलाकात हुआ या वन-ऑन-वन मुलाकात हुआ, और मुझे एक्सेप्ट फॉर वन तो मुझे ये भी मौका मिला कि उनकी सरजमीन पे जाके, ये बड़ा ज़रूरी था इन द जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कि भारत की सरजमीन पे ना सिर्फ मेरे चीन का वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुआ, रूस का वज़ीर ख़ारजा के साथ एक बहुत तफसीली और बहुत अच्छा मुलाकात हुआ, और साथ साथ जो तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे उनके साथ भी हमारा बायलैटरल इंटरैक्शंस हुए। इसलिए कि ये जो दिस वाज द प्रोफेशनल कंपोनेंट ऑफ द मल्टीलैटरल engagements, of the bilateral engagements, एक जो एलिमेंट मिसिंग था, जो आम तौर पे अगर आप इस किस्म का इवेंट पे जाते हैं, वो तो आपका बायलैटरल मुलाकात होता होस्ट ममालिक के साथ, आपका बायलैटरल कॉन्वर्सेशंस विद द होस्ट कंट्री। तो हमने उसूली तौर पे जाने से पहले ये तय किया था कि 2019 के वाक़यात की वजह से we will not seek a meeting, a bilateral meeting with our Indian counterparts. ये हमारा उसूली मौक़िफ़ था, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो stated position था. It was not us just stating that position, then it was us acting on that position. But just because we don't speak directly or meaningfully with the Indian state, I didn't want to miss the opportunity to engage with the Indian people. और मेरा ख्याल में एक फुकदान है, एक बहरान है, वो ये है कि पाकिस्तान की जिस तरीके से हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता था, कल्चर टू कल्चर बातचीत होता था, वो बहुत ही मुतासिर हुआ है फॉर द नॉट जस्ट फ्रॉम 2019, इवन फ्रॉम बिफोर. तो जो मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस ट्रिप के हवाले से मिला था कि भारत के जो सीनियर एंकर्स हैं और जो सीनियर प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मुझे ये मौका मिला कि मैं बैठूं और डायरेक्टली उनके थ्रू मुखातिब हूं भारत के अवाम के साथ. और एक बार फिर वहाँ इन इंटरव्यूज़ में भी हमारा ये कोशिश था कि एक मिथ, एक परसेप्शन, एक बयानिया जो मुसलमानों के बारे में फैलाया जा रहा है, कश्मीरियों के बारे में फैलाया जा रहा है, पाकिस्तानी के बारे में फैलाया जा रहा है, उसको डिसप्रूव करने की कोशिश, उसको काउंटर करने की कोशिश कि हम सब दहशतगर्द नहीं हैं, हम पुरअमन लोग हैं. एक्चुअली हम वो लोग हैं जो अमन चाहते हैं, और अगर इस अमन में कोई रुकावट है तो वो लोग हैं जिन्होंने 2019 के फैसले लिए, जो हमसे किसी न किसी बहाने पे या किसी की वजह से वो बातचीत आगे नहीं लेके जा रहे हैं. अगेन आई थिंक कि वो अपॉर्चुनिटी हम सबको ज़्यादा लेना चाहिए. हम तो अपना मीडिया चैनल्स पे जाते हैं, मगर पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के सियासी लीडरशिप, इवन आवर पार्लियामेंटेरियंस हमें
उनका मीडिया से तो ज़रूर इंगेज करना चाहिए ताकि ये मिसपरसेप्शन जो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में बनाया जा रहा है, उसको हम काउंटर कर सकते हैं। थ्रू आउट माई स्टे इन गोवा, मैंने ये पब्लिकली भी उनका मीडिया में वो कन्वे किया है कि एट नो पॉइंट इन टाइम वो माई होस्ट बैड होस्ट्स, वो अच्छे होस्ट रहे। उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल्स और पूरे रूल्स के मुताबिक हमें चलाया, और हमारे ज़ाती इंटरेक्शंस में ऐसे कोई मौका नहीं था जहां मेरा जो काउंटर पार्ट था उनका कि उनको कोई गलत रवैया हो या एब्सोल्युटली प्रोफेशनली उस लिहाज से उन्होंने एंगेज किया। बस अफसोस के साथ कि जाते हुए हमारा पीठ पीछे जब हम मौजूद नहीं थे जवाब देने के लिए, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए और ऐसे जज्बात के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जो मेरा ख्याल में नामुनासिब था। It was an abuse of the chair of the SCO to sit in front of in the main SCO का जो प्रेस रूम है, और आपके पीछे सारे ममालिक के फ्लैग्स भी हो और SCO का नाम भी हो, और उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किया गया वो गैर मुनासिब था। It was a violation in my view of the SCO rules। मगर उस इंसिडेंट के अलावा मेरा कंक्लूजन इस ट्रिप के बाद ये था कि जहाँ तक कश्मीर का मसला था, जहाँ तक पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल इश्यूज हैं, और जहाँ तक हमारा मल्टीलैटरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फ्रॉम द SCO टू द SCO, कि इन तीनों जो इन दीज थ्री फील्ड्स इट वाज अ प्रोडक्टिव विजिट, इट वाज अ पॉजिटिव विजिट। और आगे जाके हमारे सामने एक तो PM साहब का हेड ऑफ स्टेट का, हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्फ्रेंस होगा उस पर फैसला लेने पड़ेगा कि शिरकत कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कौन से लेवल पे कर रहे हैं। और आगे जाके फिर 2026 और 27 में पाकिस्तान का बारी होगा कि हमें SCO कॉन्फ्रेंस का ये जिम्मेदारी मिलेगा और हमें भी मेज़बानी करना पड़ेगा। एंड इंशाल्लाह ताला जब वो मौका आएगा, मेरा उम्मीद ये है कि विद इन द नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रेसिप्रोकैलिटी के भारत भी उसी अंदाज से SCO के साथ एंगेज करेंगे जैसे मैंने एंगेज किया। वो SCO की हद तक है, एंड I'd like to give the opportunity for anybody to ask me questions as far as the SCO is concerned before I move on to the G20. Thank you. Sir, thank you so much. First of all, हम appreciate करते हैं कि you are carrying yourself and Pakistan all over the world. मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिस SCO चेयर का आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लिए काउंटरपार्ट वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सेनेट खारिजा उमूर कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम का बानी मुल्क चीन है। शंघाई ताउन तंजीम एक कसीरुल-जहती फोरम है। अगस्त 2019 के बाद मैं तो नहीं था, एंड इनफैक्ट मेरा यहाँ तकरीबन जो एटलीस्ट वहाँ तक जितने लोग हैं मेरे साथ थे जहाज़ पे जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मगर जैसे मैं उतरा जहाज़ से, मैंने खुद कराची एयरपोर्ट पे इनफैक्ट आई वाज सपोज टू फ्लाई टू इस्लामाबाद, रिफ्यूलिंग के लिए हम स्टॉप हुए थे कराची, मगर मैंने खुद कराची एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके इल्ज़ामात का जवाब दिए। अब फिर ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली जहां अप्रोप्रिएट है हमारा फॉरेन ऑफिस ने भी इस बात पे एंगेज किया। First of all, I would congratulate you कि आपने पाकिस्तान के केस को बहुत बेहतर इनिशिएट किया, और particularly terrorism जिस तरह आपका it's very close to your heart because of Shahid Mohtama and otherwise also. I, as a resident of the largest province of Pakistan, Balochistan, when you mentioned abortion on the Indian soil, that was candid, courageous, and very apt. इसलिए कि Indian decent population जिनकी contribution जो उनके taxpayers at their behest and state intervention is being done in my province, or as a consequence of that intervention, some thousands of people have lost their lives. They've been the victim of that terrorism, and Indian populace should know that where their contribution is heading towards.
ہمیں بار بار میری صرف آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی لیڈرشپ میں جو انڈین ڈارک سائڈ ہے as far as terrorism is considered as a tool which is being used against the state of Pakistan and its common populace. It needs to be projected more, it needs to be told as it is. We are not propagating here, but we are just illustrating the facts. میری درخواست آپ سے ہے کہ آپ یو آر دا گرینڈ سن آف ذوالفقار علی بھٹو جس کی انڈیا کے ساتھ ایک ٹریڈیشنل آئیڈیولوجیکل پوزیشننگ لی ہے آن دا بیسس آف اسٹیٹس نیریٹو. سو وی شوڈ آل کیری دیٹ. ہماری سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ہے اور اس بات کو مزید اسٹرینتھ کے ساتھ کرنی چاہیے. ان کی انویسٹمنٹ برامدہ بھٹی میں تھی. میری درخواست ہے نیکسٹ ٹائم جب آپ جائیں تو ساتھ میں سرفراز بھٹی لے جائیں. ان کو پتہ لگا. آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر وتھ یو دین میں جب انٹرویو کر رہا تھا وہ بڑا سینئر جرنلسٹ جو کیمبرج سے ایجوکیٹ اور جب میں نے کلبھوشن کا ایک فیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے مطلب آئی وازنٹ ٹرائنگ ٹو اسکور پوائنٹس آف اینی تھنگ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے بس ذرا اس اسٹیٹ ایکٹر کا آپ جواب دیں. جس طریقے سے انٹلیکچوئل جرنلسٹ کیمبرج ایجوکیٹڈ لوگ بھی جذباتی ہو گئے اس سے مجھے sort of اندازہ ہوا کہ this is no longer an intellectual debate, it is an emotional debate. And it is very important for us to convey because ان کا ایک بڑا insular, even though there's supposedly a big democracy now اور اتنا زیادہ میڈیا ہے ان کا, they have such an insular environment کہ ان کو کلبھوشن یادو کے بارے میں پتہ نہیں ہے. And this is a very serious violation of our sovereignty. It is a very serious threat to our national security. If a state actor, a Navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan's soil, اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس ایشو کو اٹھائیں, اس ایشو پہ ہم ہائی لائٹ بھی کریں, مگر ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ او یو مینشن ون اینڈ آئی مینشن another. ہمارا مقصد, ہمارا میسج یہ تھا کہ جو ہمارے مسئلے ہیں ہم ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں, مگر ایسے ہم سے نہ بات کرے کہ سارے برائی یہاں اور آپ کسی قسم کی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں. میرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس موقع پہ آئے کہ ہم انگیج کر سکتے ہیں then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. کہ ہمارا سیکیورٹی کے لیے, آپ کا صوبہ کے لیے, پورا پاکستان کے لیے, مگر خاص طور پہ جو ایڈونچرزم ہو رہا ہے آپ کا صوبہ میں, اور پھر جو بھی ان کے کنسرنز ہوں گے ہم بھی جینیوئنلی انٹرسٹڈ ہے کہ جو آپ کے جینیوئن کنسرنز ہیں, اگر آپ کہیں گے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں تو obviously that's not a tangible thing to deal. But when you talk about specific, Pakistan has always been willing to engage and we continue to be willing to. مجموعی طور پر جو ممبران تھے ان کی جو ہے کیا رائے تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ گزشتہ دنوں جو افغان ایکٹنگ فارن منسٹر یہاں پہ جو دورے پہ آئے تو میڈیا کے مطابق اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ بات چیت سوال کیا. اگین یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور افغان کوشچن پہ میرے خیال میں جو تمام every single country present at the SCO is particularly concerned about the consequences
of the events in Afghanistan. اور اب تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب سے ایور سنس دا فال آف کابل, اور ان کا اثرات پوری دنیا دیکھ رہے ہیں, مگر ایز دیئر نیبر وی آر ایکسپیرینسنگ فرسٹ ہینڈ. اینڈ the context, the concept of the SCO, of regional integration, of economic, ہمارا جو ویژن ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کروانے چاہتے ہیں, we want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked, and سب اپنے economic integration چاہتے ہیں, regional economic integration چاہتے ہیں. So Afghanistan is a key peg in that, کہ افغانستان اگر اسٹیبل ہوگا, سیکیور ہوگا, پراسپرس ہوگا, تو سب سے پہلے افغانستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. But the next people to benefit would be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade, اور اس لحاظ سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم بھی, we are cognizant of that, the Afghans are also cognizant of that. And this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to, and ہمارا نیت تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بھائیوں کے ایشوز جو ہیں ہم ایک اچھے انداز سے, اچھے طریقے سے ان کو حل کریں. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. ایک تو let's start with ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, جو افغانستان کے ریسورسز ہے, جو ان کے اپنے فنڈز ہیں, they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public, that they want to cut their hands and, wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. جو افغانستان اور افغان کے انٹرم حکومت سے ہمارا اتنا ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم سارے چیزیں میں آپ کا مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ ترقی کریں گے تو ہم ترقی کریں گے, ہم ترقی کریں گے تو آپ ترقی کریں گے. ہمارا صرف اتنا ایشو ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے آرگنائزیشنز جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا کویسچن ہے, پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی کا کویسچن ہے, ہمارا کور ایشو ہے. آپ چین کے ساتھ انگیج کریں گے, چین کے کچھ کور ایشوز ہیں جس کا ہم سب ایسے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کور ایشوز ہے, میں اتنا ان کا دفاع کروں گا. تو میرا امید ہوگا, پاکستان کے عوام کا امید ہوگا کہ اگر یہ پاکستان کا کور ایشو کو افغانستان کا انٹرم حکومت اتنا ہی گارڈ کریں گے جیسے وہ اتنا ان کا اپنا کور ایشوز ہے. And as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. تو ہم تو ابھی سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. But that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but خدا نخواستہ we won't be the last victims. اگر اکنامک سچویشن اس طریقے سے بگڑتا جائے گا افغانستان میں, ریفیوجی ایکسوڈوس بھرتا جائے گا اس طریقے سے افغانستان سے, اور یہ سیکیورٹی تھریٹ جو وہاں سے ایمنیٹ ہوتا ہے اس کو سیریسلی نہ لیا جائے, if it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us.
they're attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And اس پہ ہمارے political consensus across the board ہے کہ there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point کہ اتنا polarized geopolitical environment میں اگر آپ bilaterally ممالک کے ساتھ بات کرتے ہو تو every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. آپس میں اتنا بات نہیں کر رہے ہیں. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, on Afghanistan. But bilaterally, جب بات ہو, so there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, جیسے میں واپس آیا SCO سے, ہمارا bilateral تھا چین کے ساتھ, پھر trilateral تھا چین افغانستان کے ساتھ, اور پھر میرا bilateral تھا interim government کے ساتھ. اور جو everybody else must have gone in with the broader agenda. And in an ideal situation, I too have a broader agenda. But for these particular interactions, I had a one-point agenda. کہ Tehreek Taliban Pakistan, BLA, Majid Brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are functioning. This was my one-point agenda. کہ اس کو آپ نے ہمارا پیج پہ آ کے we have to address this issue. And I was very clear with my Afghan counterpart that this is the one thing standing in the way of Pakistan-Afghan relations. Because ایک issue حل ہو جاتا ہے, then there's nothing that can stop us. ہم پورا دنیا کو مل کے منہ دے سکتے ہیں. مگر جب تک یہ مسئلہ ہمارے درمیان میں رہے گا, تو there'll be a lot of space for problems to take place. We are engaged persistently, aggressively, diplomatically with them on this issue, on all fronts. And one thing I will give them is that there is, no one can deny that there's a capacity issue. NATO has up and left from Afghanistan. They don't have a standing army. They don't have a coordinated, synchronized counterterrorism force. یہاں تک کہ ان کے پاس وہ بارڈر فورس نہیں ہے کہ وہ اپنا بارڈر مینیج کرے. اینڈ بارڈر مینجمنٹ سائنس آل اوور دا ورلڈ ول ٹیل یو کہ بارڈر مینیج کرنے کے لیے جو بیسک ایلیمنٹ ہے کہ وہ یک طرفہ مینیج نہیں ہو سکتا ہے, وہ دونوں طرف مینیج ہو. یہ ان کا جینیون مسائلز ہیں. دس آئی ایم ولنگ ٹو appreciate, understand. I have empathy for these issues. What we won't and cannot have empathy for, what we don't have sympathy for, is if there's a lack of will to take on those people and those groups that are a serious threat to us. As far as the comment about Pakistan having dialogue with those groups, that would be a decision for Pakistan. And Pakistan has taken the decision that we've ended the policy of appeasement. There's no room for the policy of appeasement. And وہ لوگ جو ہمارا آئین نہیں مانتے ہیں, جو ہتھیار اٹھاتے ہیں پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف, ان کو ہم we will deal with them with an iron fist. And I have conveyed to my honorable counterparts in no uncertain words that there can be no confusion. کہ اس پہ ہم نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. نہ پاکستان کو ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے ان آرگنائزیشنز کا, ان تنظیموں کا مقابلہ کرنے کے لیے. I can't paint you the most perfect picture about the situation, but I'm committed to continuing to engage with the interim government in Afghanistan. I see no other solution other than engagement. But یہ ایک لمبا سفر ہے جو ہمیں ساتھ طے کرنا پڑے گا. اینڈ جیسے یہ ایشو طے ہو جائے تو پاکستان کے کافی مسئلے حل ہو جاتے, ان کے اپنے مسئلے حل ہو جاتے. یہ جو ہمارا SCO ہے, ان کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ انلاک ہو جاتا. So thank you for your question. کم عمری میں جو منصب آپ نے سنبھالا ہے اور آپ کی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں, آپ کی میٹنگز بھی, گفتگو بھی, اور اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ایک
فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ بزرگی با عقل است نہ بسال، توانگری بدل است نہ بمال. کہتے ہیں کہ بڑا ہونا جو ہے وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ عمر کے ساتھ، اور سخاوت جو ہے وہ دماغ کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہے بلکہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس عمر میں اس اہم منصب پہ جو آپ کی کارکردگی ہے اس کو میں تحصیل کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور چلانے تحصیل کا. جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان مصالحت کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ پاکستان کافی دیر سے ہم نہ صرف اس کانٹیکس میں ہر کانٹیکس میں ڈائلاگ کا حامی ہے، انگیجمنٹ کا حامی ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کے حامی ہیں. اور جب بھی ہمارا ایران کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو، سعودی عربیہ کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو، جس کا بھی حکومت ہو، ہر دفعہ اس ٹاپک پہ پاکستان کی طرف سے ایک ایڈوائس، ایک مشورہ اور امید ہی یہی ہے ہمارا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس خاص طور پہ مسلم امہ کے درمیان جو مسئلے ہیں وہ حل ہو. لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ چین کا ہے. میں خاص طور پہ اپنا جو کاؤنٹر پارٹ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگ یی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ دس از ان اے ٹائم، ایک زمانے میں جب صرف اور صرف ہمیں برا خبر ملتا ہے. ٹی وی آپ کھلتے ہو تو وہ شروع ہوتا ہے برا خبر سے، ختم ہو جاتا ہے. اپالوجیز ٹو مائی میڈیا فرینڈز ان دا روم. مکمل ہو جاتے ہیں تو برا خبر کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں. اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو بڑے بڑے قوتیں ہیں، جو سپر پاورز ہیں، جو ایک زمانے میں ان کا رول تھا، ان کا ایک یارڈ سٹک ہوتا تھا جس سے آپ ان کا کردار کو جج کرتے تھے، وہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کون امن کے لیے کام کر رہے ہیں، کون لڑائیں کم کر رہے ہیں. وہ سارے قوتیں جو ماضی میں امن کے لیے کوئی کردار ادا کرتے تھے، انفارچونیٹلی ایک انوائرمنٹ ایسے ہوا ہے کہ وہ آپس میں صلح کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو میں تو فارن منسٹر پاکستان ہوں، میں وہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جس طریقے سے ان کو شاید وہ پیس میکنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ایٹ لیسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہم خاص طور پہ جب اب ایک جنگ کا ماحول اتنا دیر بعد یورپ میں آ گیا ہے، ان کا جو they're very emotional, they're very upset right now and legitimately so. اس کی وجہ سے ٹینشنز تو بہت اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ فورن منسٹری کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جہاں ہائٹن ٹینشنز. اور اس پورا سچویشن میں چین نے ایسے کردار ادا کیا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے وہ لوئسٹ ایب پہ تھے. میننگ فل انگیجمنٹ نہیں تھا، مشنز ان کے کھلے نہیں تھے. اور اس صورتحال میں میرا خیال میں چین نے اپنے آپ کو نہ صرف سپر پاور ثابت کر دیا مگر پیس میکر ثابت کر دیا. اور جو آنے والے زمانہ ہے، جو نیا دور ہے، اس میں میرا خیال میں جو جنگ کروانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم جگہ ہوگا اور جو امن قائم والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ جگہ ہوگا. جیسے یہ اچھا خبر ہمیں ملا، جیسے ہم نے دیکھا کہ چین، سعودی اور ایران کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹس ہوا، اس کے ریپل افیکٹس آپ کو پورا مڈل ایسٹ میں نظر آنا شروع ہوگی، یمن میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور امید ہے کہ جیسے اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ایران اور سعودی تعلقات میں بہتری کی وجہ سے پاکستان پہ بہت اچھا جو اثر ہوگا. I'll start off briefly, then just before I get into the details,
then I'll ask our media friends to. जब भी आप चाहें प्लीज लेट अस Okay. तो जहाँ तक G20 का पूरा मीटिंग नहीं तो ये यूथ कन्वेंशन टूरिज्म का जो इवेंट्स रखे गए थे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यकीनन अफसोसनाक, कंडेमेबल, जितने दफा हम कंडेम करें वो कम होगा, ऑफेंसिव, obnoxious. मुझसे इस पे सवाल किया गया था जब मैं भारत पे था, और मैंने तब भी उनको यही जवाब दिया कि ये तो समझ रहे हैं कि ये शायद बड़ा कमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, इनका एरोगेंस जो है दैट इज ऑन डिस्प्ले फॉर द वर्ल्ड टू सी, कि भारत कह रहा है तो हेल विद इंटरनेशनल लॉ, टू हेल विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, मेरी मर्जी जो मैं करूं। वो शायद खुश हो रहे होंगे कि ये काम कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल में उनका असल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। यू कांट ड्रीम ऑफ बीइंग अ सुपर पावर बाय वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, यू कांट एस्पायर टू बी अ सुपर पावर बाय वायलेटिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। तो ये जितना अपने अना पे और अपनी जिद की वजह से इस किस्म के काम करेंगे, उतना ही मेरा ख्याल में वो दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएंगे। दिस वॉज एन obnoxious effort। मगर आपने देखा, मैंने सिर्फ एक ही इतना ही सा वादा किया था भारत में जब मुझसे पूछा गया, बड़े क्लेम्स नहीं, मैंने सिर्फ इतना से उनको कहा कि आप देख लेंगे भारत विल बी अनएबल टू अचीव 100% अटेंडेंस, और इसलिए कि मुतनाज़ा इलाका है, इसलिए कि इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इस गोल पे नाकाम रहे, and they were unable to get, I think it was 60 was their total invite list, कि वो 60 जो उनका टारगेट था, जिनको उन्होंने दावत दिया, everybody didn't attend in person. Some countries made their non-attendance public information. Some countries didn't attend but didn't make their non-attendance public information. Other countries downgraded their attendance to very, very junior levels and attended, but attended despite their protest on the issue of Jammu and Kashmir or the issue of a disputed territory. और मैं जरा देख रहा था कि मीडिया कवरेज, कि अगर आप नॉर्मलसी को दिखाना चाह रहे हो, नॉर्मलसी का पैगाम और टूरिज्म का पैगाम भेजना चाह रहे हो जम्मू और कश्मीर के बारे में, मैंने सारे यूनाइटेड किंगडम का, अमेरिका का, फॉरेन पॉलिसी का, मैंने सारे ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो उठाए, मुझे एक नहीं मिला। आई कुड नॉट फाइंड one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism. I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs. हर रिपोर्ट में मुतनाज़ा इलाका का जिक्र है, या 2019 का जिक्र है, या ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस का जिक्र है। तो अगर उनका मकसद नॉर्मलसी का पैगाम था, उसमें वो नाकाम रहे। अगर उनका मकसद ये था कि पूरी दुनिया को बुला के पूरी दुनिया मान भी लेंगे, सारे आ ही जाएंगे और उनको एक किस्म का सील मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। जहां तक आपके एफर्ट्स होंगे, पाकिस्तान के एफर्ट्स होंगे, इनके एफर्ट्स होंगे, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आई कैन ब्रीफ यू ऑफ द record, नॉट ऑन द record, बट suffice to say कि दिस इज समथिंग कि आप जितना भी कंडेम करें वो कम होगा। Every crisis provides an opportunity, and इस crisis का opportunity ये था कि वो कश्मीर के अवाम जो 2019 से उनको बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा था कि उनका अपना इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए, उनका अपना इशू को मीडिया अटेंशन दिलवाया जाए, उनको वो मौका मिला कि उनको मीडिया अटेंशन, इंटरनेशनल अटेंशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ देयर इशू, उनको वो मौका मिला। दूसरा, आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक, JKPP का नुमाइंदगी तो है, लेकिन मैं कश्मीर गया था पिछले 2-3 दिन,
कश्मीर में था, जब मैंने समझा कि ये साथ साथ हो रहा है तो हम भी एक ज़ारी यकजहती करें। नाइक साहब, इनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मैं उधर एक आई वेंट फॉर स्पीच देयर लेजिस्लेटिव असेंबली। आप ये अगर सेनेट में कोशिश करते या आप नेशनल असेंबली में कोशिश करते, वी कुडंट रेप्लिकेट देम। इट वाज सो एनकरेजिंग, इट वाज सो पॉजिटिव, इतना अच्छा पैगाम दिया गया है पूरा दुनिया कि चले इधर पाकिस्तान में जितना हम आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ कश्मीर का मौक़िफ़ था। कश्मीर के तमाम सियासी जमातें ना सिर्फ मौजूद थे, अपने बातें अपने अपने जो तकरीरें थे उन्होंने अपनी तकरीरें की, और एक इतना अच्छा गुड फीलिंग के साथ मैं वहाँ से निकला कि मैंने समझा कि ख़ास तौर पे एक नौजवान होते हुए कभी कभार जिस तरीके से जिस किस्म के सियासी मसले तो बन जाते हैं, काफ़ी मायूस कन है, मायूसी होते हैं, लेकिन वो हौसला देखे, वो यूनिटी देखे, मैं बहुत खुश भी था। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से इनका जो तमाम सियासी जमातें हैं, JKPP, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, AJKPP, PMLN, कोई रह गया भी तो everybody was there, and it is a true testament to the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very, very impressive. And फिर हम जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे, फिर हमने जलसा रखा, और जो नॉन पार्लियामेंट्री पार्टीज जो है, हमने सब मिलके एक एहतजाजी जलसा भी रखा। जहाँ तक ऑन द डिटेल्स ऑफ who went, who didn't go, हमारा क्या काम था, I'm happy to share that with you, but I would request के अगर कैमरा चल रहा है, हम कैमरा को बंद करें, and मीडिया दोस्तों